हेलो फ्रेंड्स, आशीष क्याल हियर एंड वेरी वार्म वेलकम अगेन। यहाँ पर अब जो बॉलिंगर बैंड्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोगों का जो कमेंट्स और जो आपने सराहना की है, इट्स fantastic, and I thought we will continue with this series of Bollinger Bands, how you have to trade the market looking at Bollinger Bands. I'm sure you have so far seen the earlier videos that we have published. नहीं देखा है तो जाइए देखिए, चैप्टर 1 से शुरू होगा and you can continue to go chapter wise. That's why we are publishing this video every single chapter. Before I move on, I would request everyone to ensure to subscribe and like the channel so that you do not miss out on such important updates that we are publishing. So ensure you are doing that. And it is always pleasure to talk about some techniques or methods that actually work in the market. Bollinger Bands, if applied correctly, can be traded with a very high conviction. So जैसे कि मैंने last video में आपने देखा होगा, मैंने बताया था I am going to reveal across how to look at simple price action candlestick technique along with Bollinger Bands. तो वो मैंने आपको बताया था last time भी, और उसके ऊपर कंटिन्यूड कर रहे हैं. सो यू नो यू हैव टू गो एंश्योर टू गो थ्रू एवरी सिंगल चैप्टर एंड यू विल बी थ्रिल्ड टू सी हाउ इजीली you can see these techniques working in the market. So what I am going to do now, Bollinger Bands का बेसिक आपको अभी पता है, उसके एप्लीकेशन पे हम फोकस करेंगे और कैसे कैंडलस्टिक के 3 रूल्स को हम बॉलिंगर बैंड्स के साथ में अप्लाई करेंगे. सो आई एम गोइंग टू शो दैट अक्रॉस टू ऑल ऑफ यू and ensure also one more thing, you are not trading indicator, you are trading prices. भाव भगवान छे दोस्तों. सो प्राइस पे फोकस करना है और साथ ही में स्टॉप लॉस के साथ काम करना है हमें. सो चलते हैं. लेट मी शेयर अक्रॉस वेरी क्विकली माय स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू शो यू द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ candlestick price action, and then we will club that along with Bollinger Bands technique. तो चलते हैं यहाँ पर. Let me share across the current market scenario and how it is looking like over here. If you are able to see the overall movement of Nifty which is happening on within the bands, as I mentioned in the earlier videos, the most important aspect that you should remember at any given point of time is that 95% of the data or prices will be within the band only when there is a subsequent statistical significant movement. jargon use नहीं करके अगर सिंपल भाषा में बोले यार, 95% of the time prices bands के अंदर रहता है. It's only in that substantial movement होता है जिसे हम statistically significant कहते हैं, उस समय में वो बैंड को ब्रेक कर. लेकिन वो ब्रेक भी कंटिन्यू ट्रेंड होने के बाद में वैलिड नहीं है. जब बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए और फिर बैंड्स एक्सपांड होने चाहिए. सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट द एंटायर बॉलिंगर बैंड स्ट्रक्चर. सो वी विल कम टू द बैंड्स अगेन इन सम टाइम, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ हाउ डू यू लुक एट दिस प्राइस एक्शन टेक्निक. तो साथ में मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही क्विकली. इफ यू लुकिंग एट दिस एज अ चार्ट, ओके, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल मोर प्रॉपर. This is a chart and this is the candle that you are seeing right now. The trend of the market is suppose on the upside. तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है. This trend will continue on the upside unless we see close below the prior candle low with a lower high and lower low formation. इसका क्या मतलब है? अगर ये कैंडल बनी which has the high below the prior high, which has the low below the prior low, and close below the prior low. Once this candle formation happens, then we can say that the overall trend which was on the upside is now changing on the downside. That's the first confirmation. It's a simplest Dow theory technique. You can apply it on monthly, weekly, daily, आवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट चार्ट. जब ट्रेंड शुरू होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरीके से चलता है और मैं इसके आपको बैंड्स के साथ में बताऊंगा. अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या पोजिशनल भी ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत अमेजिंग चलता है. इफ यू कंबाइन दिस 3 कैंडलस्टिक रूल अलोंग विद बॉलिंगर बैंड. सो व्हाट इज द रूल? व्हेन विल द ट्रेंड चेंज? वंस वी हैव द हाई which is below the prior high, we have the low which is below the prior low, and we have the close which is below the prior low. Once these 3 condition is satisfied, we know that the overall trend
as per price action has reversed. Now ये कहीं से भी रिवर्स होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिवर्सल बैंड के लेवल से होने में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. So this has to happen from around the bands, maybe the mid band, maybe the upper band, or maybe the lower band. So the significance of this candle is also the area where it is forming, जिसे हम कहते हैं area of significance. So area of significance AOS जिसे कहा जाता है, वो एरिया कौन सी है जहां पर ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही है. तो चलते हैं, ये टेक्निक को हम अभी देखेंगे ये करंट यहाँ के मार्केट में कि क्या लग रहा है. अगर आप यहां पर देखोगे ओवरऑल निफ्टी का मूवमेंट, से दिस कैंडल वी हैव नॉट सीन अ क्लोज बिलो द लोअर एंड. हमें पता है ये मिड, ये लोअर बैंड है विच विल एक्ट एज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी. फ्रॉम हियर वी हैड अ पॉजिटिव कैंडल मूवमेंट ऑन द अपसाइड. अभी इश्यू ये है इस कैंडल में कि ज्यादा रूम ऊपर नहीं बचा था, बट नेवरदलेस दिस इज अ बुलिश कैंडल रिवर्सिंग ऑन द अपसाइड, एंड फ्रॉम देयर वी कंटिन्यू टू गो अप higher without a single candle closing below the prior candle low, which happened over here. यही चीज अगर आप देखेंगे तो अपर बैंड से फेलियर हुआ. दिस इज नोन एज अ फेलियर कैंडल. फेलियर कैंडल बिकॉज दिस कैंडल डिड ट्राई टू ब्रेक अबाउ, क्लोज नहीं किया अपर बैंड के ऊपर, वापस से जाके बैंड के अंदर बंद हो गया. दैट्स अ फेलियर कैंडल. फेलियर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल ने यहां पर लो ब्रेक कर दिया. दैट्स द सिग्नल. नेक्स्ट एक और चीज आपको कंफर्म हो गई, दिस कैंडल. सो लेट मी जस्ट क्लियर ऑफ द स्क्रीन हियर. दिस कैंडल actually also formed a high below the prior high, low below the prior low, and close below the prior low, which means this is a negative reversal candle formed with a failure of the upper band. दो चीज है दोस्तों ध्यान रखना. एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? अपर बैंड का रिवर्सल. सेकेंडली प्राइस एक्शन ने कंफर्म किया. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अ बेरिश, keeping the high of this candle as a stop loss and then riding it on the downside until you see the reversal signal or maybe the lower band. So yahan se if you check, so the first target will always be the mid band, the next target will be the lower end of the band, and yahan se agar aap dekhenge it went all the way on the downside. Mid band, look at it how strongly it was acting as a resistance, and it came towards the lower level here. It worked like magic. Similarly, अगर अभी की ये वाली कैंडल आप देखोगे, the latest candle, if you check here again, from the lower band we formed some kind of a rejection. मतलब prices did not close below the lower end of the band. मतलब ये range bound market है. एक और information मिला, this is a range bound market that you can clearly see here. What is the range of the market? If you have to know, you might just want to check. The range of the market here is going to be the upper band here and the lower band. That's the range of the market that we can clearly see on this time frame. So ये range market का है that we are seeing on the upper band and the lower band. Now from this range of the market, you will be able to make out that we have got a reversal candle here with the 3 confirmation technique. This is on 1 hour time frame. Which means now हमारा अगला लेवल क्या होगा वॉच करने का? मिडल ऑफ द बैंड, एंड दैट्स द फर्स्ट टारगेट, एंड इफ दैट गेट्स टेकन आउट अगेन द अपर एंड ऑफ द बैंड, दैट्स द सेकंड टारगेट. हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? द लोअर कैंडल जो यहां पर बना है उसका लो विल बी द स्टॉप लॉस. मे बी यू कैन गिव अ लिटिल लीवे टू अवॉइड गेटिंग स्टॉप्ड आउट इन स्टॉप लॉस हंटिंग. स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है? अगर आपके कैंडल के एग्जैक्ट लो पे आपने स्टॉप लगाया, प्राइसेस वहां जाते हैं, 2-4 पॉइंट विपसॉ करता है और आपका स्टॉप ट्रिगर होता है. सो यू नीड टू इंश्योर टू गिव लिटिल लीवे फ्रॉम देयर. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू नाउ इज टू यूज Bollinger Bands in a prudent way by combining with a simple price action technique, or you can also say the candlestick technique, which is very easy. And you can apply this not only on 1 hour time frame, you can even apply and you can try and apply the same technique on 15 minutes time frame. If you are trading intraday, you can apply this technique even on a 5 minutes time frame. और उस तरीके से आप इधर यहाँ पर
ट्रेड ले सकते हो. नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस सिंपल प्राइस एक्शन विद बॉलिंगर बैंड्स मेथड. मैं नीचे चार्ट आपके लिए बना के रखा हूं. अपसाइड रिवर्सल के लिए व्हाट वी नीड इज वी नीड हाई अबाउ द प्रायर हाई. We need close which is going to be above the prior high and low above the prior low for a positive reverse. यहां पर अगर आप देखेंगे बैंड के ऊपर गया, फेलियर हुआ. एक्चुअल ब्रेकआउट कहां था? एक्चुअल ब्रेकआउट नीचे था. The first breakout which happened, contraction, mid band support and expansion, and this was a buy signal. After the buy signal happened, it went up, reversal candle, failed breakout, reversal candle and going down. So हमारा buy signal नहीं है यहाँ पे, because many might start thinking this was a buy signal. No, the buy signal is the first candle that we get is the buy signal. Remember that very clearly. We need a band contraction, we need a breakout in from there, and we need a band expansion. So the buy signal on a 15-minute was here and not here, which was the first breakout. Here was a sell signal because it gave the trend was already started, it already was going up, and now there is a reversal on a 15-minute. Now if you check, not a single candle, ये भी attempt था दोस्तों, लेकिन close नहीं किया until here, closed above the prior candle high. Look at the beauty of this technique, and look at how the middle band was then acting as the hurdle every single time. And यहाँ पर देखो, आज सुबह if you look at it, starting of the day, you see the entire band was acting as the entire candle has not closed below the prior candle low since the morning when it started trading. Now that's the way you have to look at the Bollinger Bands technique, and you have to look at दोनों को combine करो and trade बनता है दोस्तों. Simple way से intraday में options में भी ये technique को use कर सकते हो, and you can take out the trades. So these are the videos I thought I'll come out and explain you. In fact, I will tell you, if you combine this technique of Bollinger Bands along with the concept of time, it might just be an amazing way. So यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, put your comments. What technique you think can be combined with Bollinger Bands and this price action? उसके साथ कौन सी टेक्निक आपको लग रही है कि बहुत अच्छे से काम कर सकती है? Maybe time cycle, maybe wave theory, or maybe something else. What do you want to know? I will teach you. That's my commitment to you, friends. So you need to ensure, put out your comments, like the channel, share it across so that I can explain you how this works. And in case you are interested into timing the market, looking at the strategies for timing the market, there are more details that you can find in the description and the link in the comment box. You can possibly look at that opportunity. So that's what I wanted to share across. I will continue to publish the next video on Bollinger Band, clubbing that across with one more technique that you want to understand. So comment डालना ना भूले. I will use that technique and I am going to present it across to all of you. So मैं तो बताऊंगा ही कि मेरे इंडिकेटर कौन से है, मेरी टेक्निक कौन सी जो मैं यूज करता हूँ, लेकिन आप भी कुछ सीखना चाहते तो डालिए. चलिए आज के लिए इतना ही. It's wonderful. Ensure that you do check the description and the comment section, because that's where the important information you will get. Thank you very much. It's always pleasure talking to you all. Thanks for joining me here. Ashish Kyal signing off, and do subscribe to the channel and like it also. Thank you.